हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज अपन फिर से आ चुके हैं बायोम्यूटेंट के अंदर। तो अपन ने पिछली बार क्या किया था कि अपन जो बंकर को क्या कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। और उसके अंदर क्या हुआ था कि जो आउट ऑफ डेट नाम का शायद बंदा था, और वो जो था उसको गुंडों ने पकड़ रखा था। आई मीन गुंडों से लड़ रहा था वो बेसिकली उनसे। तो उनसे अपन ने बचाया था। और इस बार अपन क्या करेंगे कि आउट ऑफ डेट के पास में जाकर के बातें करनी है। और वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई मीन बेसिकली आई हैव नो सब्सक्राइबर। तो 10 लाइक भी आ जाए वीडियो पे, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपन इस पार्ट को। Welcome to Biomutant. टॉक टू आउट ऑफ डेट, ए न्यू फ्रेंड एंड ओल्ड फ्रेंड। इसका नाम आउट ऑफ डेट है भाई। ये बंदा तगड़ा है यार। मतलब गन, व्हील चेयर के ऊपर भी गन लेके घूमता है। AK-47 है क्या इसके पास? बैड आस बंदा है काफी। इससे बात करनी है। He wants to thank you for taking his side against the scavengers. He sounds familiar. You just can't figure out why. He presents himself as out of date. He knows he's way overdue, but he hasn't given up. He doesn't seem surprised that you don't recognize him. You were just a child back then, the night everything changed. There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall, and he's happy to see it's true. The legend of the one-eyed child that grew up as an outcast is old and sad. The child could have been anyone, but the evil it had fled had left a mark. A facial scar to remember the past. Okay, फिर से मेरे पास दो ऑप्शन आए। Remember what? The scar. ये पूछता हूँ। How Lupa Lupin somehow left you alive after his raid on the old village. He must have had a purpose with that. The question is, what? There's no doubt you're the child, and that what Lupa Lupin did to your village, your Muma and Popsy, was the beginning of the end. Muma and Popsy? He says it has taken you a long time to bring the past back up to the present, to find your way back, but he's grateful you have. It was after the attack that the unity fell apart. Your Muma's disciples divided and formed tribes as a reaction to the blight that had fallen upon the land. क्या पूछूं मैं? I think ये पूछ लेता हूँ। The impending threat of the world eaters bringing down the tree of life is ever so close. He also worries about the JAGNI tribe that's actively working for a doomsday and purging of the world. Had it not been for the tree of life, no one would have survived. He hopes you at least remember the tree. Tree of life? मुझे नहीं पता भाई। Okay, talk to the best before, way back in the long time ago. ये कौन है? ये मैं ही हूँ क्या? I mean, बेस्ट बिफोर से बात करनी है मुझे। वाह, चाल तो देखो भाई। कैसे चलता है भाई? हुआ है ना ये। इसका नाम बेस्ट बिफोर है। Asks if you were tired, as it's a bit of a hike here from the village. He wonders if your Muma knows you are here. यही देखता हूँ मैं। You're such a good child, so you probably did. Even the young forget. अब इसकी आवाज को क्या हुआ है? He understands why you came all the way out here, to see them, the potato people. The potato people, or Nono, are a wonder, somehow interlinked with this little tree here, fueling its source of life.
Potato people. No, potato people is better. I don't believe in magic. I think. Magic? He claims it's just the force of life, the existence of energy, powering and connecting all things living, like the nono. The nono prefer to hide in glitter grass. He says you should get over there and ruffle it. See if you can make one come out of hiding. मुझे रफल दी ग्लिटर ग्रास करना है भाई. ये तो कूल डूड है यार. देखो तो सही, कॉन्वर्स के जूते पहन रखे हैं, जीन्स पहन रखी है, ऊपर जैकेट है, अंदर टी शर्ट है वी शेप की, चश्मा लगा रखा है, बाल ऊपर कर रखे. अरे वाह, कूल डूड है यार ये तो. ओके, फिलहाल मुझे लाना है ग्लिटर ग्रास. किसी ग्रास के पास में जाना है क्योंकि ग्लिटर कर रही है. ओके, जल्दी से जाता हूँ मैं. आई मीन कहाँ पे है? इस केव के अंदर है शायद वो. उस बंदे का गला खराब है, मुझे पक्का लग रहा है. मुझे ग्लिटर ग्रास को लाना है. उस बंदे को गिफ्ट की गोली लगती है, वो चाहिए उसको, मुझे ये पक्का लग रहा है. वाओ. अब यार ये तो बहुत प्यारा लग रहा है भाई. ये क्या है? रफल दी ग्लिटर ग्रास. रफल का मतलब क्या होता है? क्या करना है मुझे यहाँ पे? हैं? कुछ राइट क्लिक करनी है. You found one. You should be proud. They don't come out for everyone. The nono's key energy is just what the pensai needs to complete its cycle and grow into a tree of life. Pensai. What pensai? The small tree you saw up there where you met will eventually grow into a tree of life and start giving back to nature. It'll be the heart of the land. You'll need to support the tree for a long time to come. The only way it'll grow tall is with the burst of ki released from the nono as they become one with the tree. You'll need a net to catch the nono, and he wants you to use his, but asks you to be gentle. The nono are sensitive beings, an embodiment of ki, the primal energy. और इसने मुझे अपना नेट दे दिया और मुझे नोनो को पकड़ना है. ये नोनो मेरे सामने तो है. कहाँ है मेरा नेट? अच्छा, ऐसे पकड़ना हो. आई गेस मैं उसको पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ भाई. You handle that net like you've never done anything else. He's impressed. मैं तो बहुत बेकार तरीके से किया उसको. 3 बार तो मिस हो गया. He's grateful for all the help he can get. There's lots of nono out there that need to be guided to the roots of the pensai tree. Where can I find them? How many does it need? ये तो काफी टफ चॉइस है. I guess पहला वाला ठीक है. They're hiding in the glitter grass that mostly grows deep inside damp caves, where they draw mineral from the natural rock. One day, he hopes the tree will have grown tall enough to sustain the world. But today, your focus is getting this one to become one with the tree. ओके, अब मुझे क्या करना है? मर्ज द नोनो विद द ट्री. जो नोनो मैंने पकड़ा है आई गेस उसको ट्री के पास में लगाना है. तो मैं यहाँ से जाता हूँ. कूल डूड. कूल. ये तो काफी तगड़ा बंदा है. आई मीन स्टाइलिश बंदा है भाई. जैकेट पहन कर रखता है, ऊपर चश्मा लगाता है, बाल भी ऊपर रखता है भाई. स्टाइलिश है. उसका नाम क्या है? नोनो. नहीं, उसका नाम क्या था? पोटैटो पीपल है वो. उसका नाम तो बेस्ट बिफोर था. और ये जापान का है क्या अब सीन? आई मीन जापान में होते हैं. कुंफू पैंडा की पूरी थीम है, देख लो. कुंफू पैंडा में ही होते हैं ना ऐसे मकान का मतलब. आई मीन जहाँ पे मास्टर शिफू सिखाते हैं. लगता है ये मास्टर शिफू है. दिखाना एक बार. मुझे लग रहा है ये मास्टर शिफू है.
फिलहाल तो मुझे नोनो को ट्री से जोड़ना है। भाई जुड़ गया, वाह। Now that you've seen the Nono's connection with the tree with your own eyes, you have no reason to doubt. From this day on, he'll make nurturing the pensai into a tree of life, a life goal, not only for our village's sake, but for all of us, everyone. One day, the land won't be as peaceful. Not even your Muma will be able to protect us. You can already see the effects from how reckless those before us acted, and unless something changes, we're doomed. The land won't survive the side effects of the old world's industrial advances. He says you'd better hurry back to the village before your Muma comes looking for you. You did good here today. या मुझे अपनी मम्मी, मूमा का मतलब मम्मी होगा बेसिकली, मुझे ये लग रहा है जहाँ तक। No, she's got lots on her mind and needs rest after the raid last night on the Lupin camp with her disciples. Wonders if they let the Predator family live or not. मुझे ये फ्लैशबैक था क्या? He lost you there for a while, but no memory is alone. It's part of a trail you can follow. The tree started to die when the end of days begun, and it wasn't long after that that the World Eaters arrived. World Eaters, the end of days. End of days तो अपने को पता है। The genetic evolution that occurred after the apocalypse that Toxanol Corporation inflicted on the land set the World Eater's DNA into overdrive. His friend Gizmo is working on a Mekton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. Wiz is still repairing his octopod to confront the Merc Puff that dwells deep down under the surface at the end of the Northwest Route. Noko has tamed the Midget and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. Finally, Goop is almost done with the Goo Glide, a machine able to ride the waves of the surf all the way out to the Porky Puff at the end of the route to the southeast. Out of Date says his friends are gearing up to stop the World Eaters. There's one at the end of each route. The road ahead won't be easy, but he's counting on your support. His friends aren't strong enough to end this on their own. He wants you to understand that you'll all die if the tree isn't saved. I guess, how can I defeat the World Eaters? यही main question है, उनको मारना है। His friends have prepared something specific for each World Eater. The Mekton, the Octopod, the Majute, and the Goo Glide are almost ready to ride. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. ओह, ये वही बंदा है यार। मतलब ये फ्लैशबैक में गया था, इसने मुझे स्टोरी बताई थी कि ये कैसे जो वर्ल्ड, वो क्या ट्री ऑफ लाइफ जो था, उसको उसके अंदर वो आई गेस नोनो डालता था। और फिलहाल मुझे क्या करना है, गेट आउट ऑफ द बंकर। अच्छा, बंकर से बाहर जाना है। आई मीन यही टारगेट था मेन। गेट से जाऊंगा मैं। ओके, गेट ये बंद कर दिया था मैंने, इसलिए क्लॉबर यूज करना पड़ गया मुझे। Quickest way out is through the roof where they came in, and the rope looks strong enough to climb. ये आउट ऑफ डेट का क्या होगा? तो ये यहाँ पे ही रहेगा।
मुझे तो बाहर जाना है। बट ये अपने को फ्लैशबैक स्टोरी बता रहा था कि भाई ट्री ऑफ लाइफ जो था वो इसने उसको बचाया था, और जो वर्ल्ड ईटर थे वो अपने वर्ल्ड में आ गए थे और वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं आई गेस ट्री ऑफ लाइफ को। तो मुझे लगता है इसके फ्रेंडों से मिलना है और उसको बचाना है पहले, ट्री ऑफ लाइफ को। ये टारगेट है। Know that the tree of life is dying. Its days are numbered. Without help, it can't endure the environmental change and assault from the world eaters. ओह, बेसिकली गेम अब स्टार्ट हुआ है। आई गेस मुझे यही टारगेट लग रहा था। मैं पहले बोल रहा था आपको, वर्ल्ड ईटर्स से बचाना है अपने को ट्री ऑफ लाइफ को। यार अजीब बात है कि इस गेम को केवल 20 लोगों ने बनाया। आई मीन सरप्राइज्ड, इतना अच्छा बना रखा है गेम। ठीक है, फ्लैग बना हुआ है यहाँ पे। A signpost maps it out for the cartographically challenged. ये साइन पोस्ट है, ओके। अब मुझे क्या करना है इसके पास जाकर? अब ये क्या कर रहा है भाई? इसने बाथरूम किया है उसके ऊपर। ये चूहा है कि कुत्ता है? एम से मैप खुलता है। बट इसने ये क्या किया है भाई? ये क्या किया? बाथरूम कर दिया इसके ऊपर। फिर से कर सकता है क्या? Let's see. वाह यार, ये तो बहुत अजीब बात है। आई एम सरप्राइज्ड। फिलहाल तो मुझे वेंचर आउट करना है वर्ल्ड के अंदर, मतलब बाहर घूमना है। बट ये बाथरूम कर रहा है उसके ऊपर, साइन पोस्ट के ऊपर जाकर के। ओह माय गॉड, व्हाट? क्या है भाई ये? अबे क्या है ये? डायनासोर? That must be the world eater that chewed off out of date's leg. You'll need a hat trick to bring that down. The world eaters have made their marks on our world over time. अबे यार, ऐसा वर्ल्ड ईटर से कैसे लड़ूंगा मैं? इतना बड़ा यार तो डायनासोर है। मैं इतना छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा हूं मैं तो। That's not the first nor the last village it'll leave in its wake. यार उससे मैं कैसे लड़ूंगा? उसने केवल उस जो आउट ऑफ डेट है उसकी टांग ही खाई है। आई मीन आउट ऑफ डेट काफी खतरनाक बंदा है यार। उसने वर्ल्ड ईटर से लड़ गया और केवल टांग तोड़वाई उससे। A survivor. Glad to see someone made it out alive. ओह, ये अकेला बच गया बेचारा। इसके घर वर सब तोड़ दिए इन्होंने। ओ, यहाँ पे ये मरा हुआ पड़ा है। अरे यार, और कौन है यहाँ पे? सब लोगों को मार दिया उसने यार। नन्ना सा मुन्ना सा क्या कर रहा है भाई तू? हेलो। He's heard the stories about the terror inflicted by the world eaters to other enclaves, but never expected one to come all the way here. He worries there won't be much left to save if this continues, even if the Tree of Life survives the attack. Anyway, he needs help and says it's by your actions you'll be judged, not by your intentions. I will leave you to your fate. Let me help. I mean, इसकी मदद तो कर ही सकता हूँ, बेचारा अकेला बच्चा है। ठीक है, let me help. He's grateful for that. You still seem to have a spark of light in you. Master Shifu. That's a spark of light in you! What's there to like about light? It hurts to look at. Not as much as it hurts to look at you. Oh, cinematic. Too much power. मेरे पास साई पॉइंट आ चुका है. I got the power, you know. बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है मेरे अंदर, मुझे लग रहा है. There's out of date again. He must have missed something important. अबे आउट ऑफ डेट इतना स्लो चलता है तू भाई. व्हील चेयर पे रॉकेट लगवा. Out of date says you will make a better stand against the world eaters with the support of a tribe, and there are two nearby. The Myriad tribe is likely to be a good match as they act on the understanding of the greater good and have a code of honor. Regardless of who you choose, it won't be easy,
as the conflict between the tribes is worse than ever, teetering on the brink of war. The Myriad's conviction to stop the World Eaters began when the Leviathans rose from the depths of the surf. Siding with the Myriad's movement for wholeness in a fragmented world might seem like the logical thing to do, but is it the right thing? One thing's certain, though. Destiny arrives all the same. The JAGNI tribe only ever had one conviction: to bring balance to the world by wiping out the weak. They believe a cleansing is necessary to restore the world and want to let the World Eaters bring down the Tree of Life. But siding with JAGNI isn't necessarily a bad thing. Fate will find a way. Out of Date says someone needs to break the stalemate and shift the balance of power to either JAGNI's or Myriad's side. He believes the tribe Sifus, Myriad especially, will listen to you and expects you to pay at least one of them a visit and play your part. मुझे tribes के पास जाना है, I guess. Have the tribes engaged to the World Eater? Myriad is convinced that defeating the World Eaters is the only way the world can be saved, but they've been forced to focus on their rivalry with the JAGNI tribe. Out of Date will be waiting for you beneath the Tree of Life if you lose track of what you need to do. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. ओके, तो मुझे यार यहाँ पे ये है कि अपने पास में दो ट्राइब हैं. ये कौन सा ट्राइब है? ये जैगनी ट्राइब है और ये है मायरिड फोर्ट्रेस. यानी इन दोनों के पास में जाना है. आई गेस इन दोनों के पास में जाकर के ही मुझे कुछ करना है. हम जनरल में क्या है ये? ठीक है, यहाँ पे मेरे पास दो ट्राइब है. ट्राइब वॉर. अच्छा, मतलब ये एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और ट्री ऑफ लाइफ ये अपने को बचाना है. बेसिकली यही है. ओके, तो मुझे यहाँ से जो है या तो इस साइड से जाऊं या इस साइड से. आई गेस ब्रिज के ऊपर से चलता हूं मैं. तो ये लोग भाई लड़ाई करते रहते हैं. Just get over it. इतना खुश क्यों हो रहा है भाई? आई मीन ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं. मायरिड ट्राइब वाले और जैगनी ट्राइब वाले. आई गेस उसने आउट ऑफ यहाँ पे ये लड़ाई चल रही है क्या भाई? ये लड़ रहे हैं देखो. आई मीन देखता हूँ कौन जीतता है इसमें. मार उसको. इसमें से किसी को नहीं मार पा रही. हदी है. मार इसको. किसी को नहीं मार पा रही. लोग खाली बैठे हुए. खत्म कर इसको भाई. तुम्हारी हेल्प करता हूं तुम लोगों की. जाओ खत्म कर भाई इसको. अबे तू पीछे से वार करता है मेरे भाई. खत्म. क्या यार, तुम लोगों से ये नहीं मारी गई. यार मैंने इनकी हेल्प क्यों करी यार? मेरे कौन से यार मौसी के लड़के लगते हैं ये. जल्दी से जाके ये चीजें उठा देता हूँ मैं. एक मिनट. इसको भी खत्म करता हूँ मैं. देखो इसको भी खत्म करता हूँ भाई. दोनों की तरफ मैं बराबर रहूंगा. दोनों को कुछ भी नहीं करूंगा. सबको जो है बराबर का हिस्सेदार बनाऊंगा. ये सब लोग इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? मार इसको. मार इसको. मार इसको. खत्म कर भाई इसको. ये ऊपर चला गया. विकेट वॉल्फ. स्पेशल अटैक यूज किया मैंने. खत्म कर इसको भी भाई. अब मैंने क्या दोनों की तरफ बराबर किया मैंने. ये ओ वाओ.
अब यार ये तो स्पेशल बंदा है, कुंग फू अटैक वाला है। खत्म कर इसको यार जल्दी। कुछ मिला मुझे इनसे? कुछ पता नहीं क्या मिला, ये तो कैंडी वैंडी भी नहीं मिली कुछ। अब ठीक है, दोनों को मैंने मार दिया। मुझे नहीं पता मुझे किसकी साइड होना है। अब मैं जाऊंगा इनसे ओ मेरा लेवल अप हो चुका है। एक सेकेंड, क्या मिला है मुझे? ओके, मेरे पास 1 पॉइंट पड़ा है इस बार। मुझे लगता है आई मीन 37 है मेरे पास वाइटैलिटी। ये यूज करता हूँ मुझे लगता है इंटेलेक्ट, क्योंकि इससे क्या 3 पॉइंट बढ़ेंगे मेरे। ठीक है, और अब मेरे पास क्या है? 3 बायो पॉइंट है, 2 साई पॉइंट है, 1 अपग्रेड पॉइंट है। अच्छा, बायो पॉइंट मैं कैसे यूज करता हूँ? बेसिक मेले मैन्यूवर ये सब सीखे हुए हैं मेरे। ये भी सीखे हुए हैं, ये भी सब सीखे हुए हैं। आई मीन बचा क्या है फिर यार? पेइंग मेंटस, मुझे ये सीखना है वैसे, बट इसके लिए मुझे 2 चाहिए और इसके लिए भी मुझे 2 चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है मैं सेव करूंगा इस बार, तो सेव करता हूं मैं। और मेरे पास बायो पॉइंट्स है। बायो पॉइंट्स कैसे यूज करूंगा? मेरी ओरा क्या है? लाइट है, ठीक है। ये रे बायो, अच्छा बायो जेनेटिक्स में बायो पॉइंट यूज कर सकता हूँ मैं। ये क्या कर सकता हूँ मैं इसको? यूज द वाइल्ड फंगी। ये किस चीज में आएगी? आई थिंक ये ठीक लग रही है मुझे, ये भी यूज कर लेता हूं मैं। इसको मैं यूज कैसे करूंगा? प्रेस डाउन द इनपुट, आई थिंक ई, अल्ट और ई, ठीक है। और साई पावर्स मेरे पास 2 पड़ी हुई है। ये क्या है? ब्लेड, ब्लिंक। मुझे ब्लेस ठीक लग रही है, ये ले लेता हूं मैं। और इसको मैं करूंगा इससे, ना ना ना, इसको मैं करूंगा इससे, ये ठीक है। ओके, मेरे पास पॉइंट्स आ चुके हैं। अब मुझे जाना है टॉक टू द जगनी और मायरिड सीफू। ये कौन सी? Destroyed this area, mudded up what used to be muck, as if it wasn't bad enough before the tribe war began. क्या मिला है मुझे? एनर्जी पैक मिला है, ठीक है। और कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे? देख लेता हूँ मैं जल्दी से। यहाँ पे कुछ है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं जल्दी से जाता हूँ उनके पास। जैगनी फोर्ट वालों से बात, ये शायद जैगनी फोर्ट है जहां तक मैप में जाता हूँ, या ये जैगनी फोर्ट है। मुझे जैगनी फोर्ट वालों से बात करनी है या फिर मायरिड फोर्ट वालों से। आई मीन That's the Jagni tribe's fort. Their friendship can be a blessing or a curse. It's up to you. You're either a part of their solution to the tribe war or part of the problem. जल्दी से मैं यहाँ पे बाथरूम कर देता हूँ आई गेस। अब यार ये बाथरूम क्यों करता है भाई? Let's see. फास्ट ट्रेवल के लिए बाथरूम करता है मेरा भाई, हदी है। Says they're wary of strangers. They're at war. I need few minutes with Shifu. Bye. नहीं, मुझे बात करनी है। Shifu, Master Shifu. Thinks you should just put one paw ahead of the other and make your way up there. The tribe is always open to a new face. I mean, Master Shifu. मास्टर शीफू से मिलने जा रहा हूं मैं। ओह वाओ, ये है मास्टर शीफू। The Jagni tribe wants to become omnipresent and, most importantly, feared. They want to vanquish the tribes, as the only way they can guarantee peace is through supremacy. The Sifu is determined to let the World Eaters destroy the Tree of Life, as it's part of their strategy to cleanse the world and start anew.
He welcomes you to the Jagni fort and introduces himself as the tribe's Sifu. The news of a cold-blooded Ronin crossing the Great Wall through the crack in Bunker 101 preceded you. इसका नाम रेडियो एक्टिव कुकू है, क्या बढ़िया नाम है। मैं ये I think ये चूज करता हूँ। He's referring to your rampage through Bunker 101. It seems you don't mind a bit of blood on your hands. That's something you have in common. Sometimes one memory can make another come to life. He hasn't thought about your Muma for ages, even though she taught him a lot. He was one of the original Wang Fu disciples. My Muma, इसके बारे में पूछता हूँ। Your Muma invented Wang Fu. Originally, it was based on unarmed combat and the 6 weapons: the boomerang, the shuriken, the bow, the staff, the nunchuk, and the hook and chain. Jagni doesn't want a new unity between the tribes. Their goal is to become omnipresent and, most importantly, feared. Says there is some darkness in the best of us, even you, and suggests you embrace that side of you and help them vanquish the tribes and let the world eaters destroy the tree of life. नहीं यार, अपने को ट्री ऑफ लाइफ को बचाना है ना। I think no, मैं no बोलूँगा इस पे। He had a feeling you'd say that. You're not sinister enough to be a Jagni. That big heart of yours makes you weak. He'll give you a chance to change your mind before you leave and asks you to reconsider. Otherwise, you'll be seen as a rival. Yeah, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. I'm your rival. Then so be it. He wants you to know that they'll show no mercy at the end of this war and offers you a last chance to come back and join when you realize you've picked the wrong side. Oh shit, हाथ ही नहीं मिलाया इसने. And with that, he urges you to seek protection at MYRIAD's stone fort before word gets out that you've chosen not to side with them. He disagrees, and the day you meet again, you'll understand why. It's time to say goodbye for now, and if it's not the kind of goodbye that lasts forever, then the next will mean the end for you. I guess अब अपने को मायरी ट्राइब के पास ही जाना है और I think मायरी ट्राइब के पास जाके अपन इस पार्ट को जो है आज के लिए खत्म करेंगे. I mean ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जैगनी फोर्ट वाले तो उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ट्री ऑफ लाइफ को, जबकि अपने को तो बचाना है ट्री ऑफ लाइफ को, है ना. अगर मुझे उसके यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है क्या कि नहीं, तो ट्री ऑफ लाइफ को बचाना है अपने को तो यार, और ये लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसको. मुझे ये नहीं चाहिए. ये क्या है, यहाँ पे जा सकता हूँ, क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे, हेल्थ पैक. क्या हेल्थ पैक, क्या गेट किया मैंने. अब मुझे जाना है मायरी ट्राइब के पास में, और उनके पास से जो है अपने को वहीं पे फिनिश करेंगे अपन इस वीडियो के आज के पार्ट को. और इस बार मुझे प्रोटेक्शन देंगे मायरी फोर्ट वाले ना. यार काफी अजीब बात है कि मतलब एक तो क्या कर रहे हैं कि ये दोनों जो थे, इनको मेरी जो मूमा थी शायद, क्या बोल रहा था वो, उसने जो है ट्रेन किया है बुंगफू के बंदे ने. बुंगफू क्या बोलते हैं, कुंगफू वो सिखाया था. और इन दोनों में क्या लड़ाई हो गई. अब इन दोनों में से क्या है, एक तो आपस में लड़ते रहते हैं. तो फिलहाल तो जो है मैं जैगनी फोर्ट वाले से तो मिल लिया हूँ, और वो लोग क्या चाहते हैं कि भाई वर्ल्ड ईटर जो है पहले डिस्ट्रॉय करे पूरी दुनिया को, और उसके बाद में क्या करे कि अपन सर्वाइव कर सकें उसको. पहले वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने दो, उसके बाद में ट्री ऑफ लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और फिर वो जो है बैलेंस बनाएंगे वर्ल्ड के अंदर. एक तरह से थानोस हैं वो, कहने का मतलब ये है. मुझे लगता है ये एवेंजर्स हैं मायरिड वाले, और वो लोग क्या है, वो थानोस है. फिलहाल अपन एवेंजर्स के पास में जा रहे हैं. मैन लुक एट दिस, कितना प्यारा लग रहा है यार. फोर्ट तो देखो यार कितना प्यारा लग रहा है भाई. आई मीन मुझे नहीं पता रिकॉर्डिंग में कैसा लगेगा, बट यहाँ पे बहुत प्यारा लग रहा है. चांद भी निकला हुआ है. चांदनी रात में जा रहा हूँ मैं मायरिड फोर्ट वालों के पास में, और फिर से मुझे लगता है पेशाब करनी. Myriad tribe's fortress. Will they be friends or foe?
You should head up there. That way you'll know. I mean, यहाँ पे बाथरूम करने की जगह होगी, है ना? ये वो रही। अबे यार, ये बाथरूम करता है यार कहीं पे जाने के लिए। यहाँ पे मैं बाथरूम कर सकता हूँ। हदी है यार भाई। क्या करता है ये? अब यहाँ पे फास्ट ट्रेवल हो चुकी है, मैं फास्ट ट्रेवल करके जा सकता हूँ इन दोनों जगह पे। छी बाथरूम करता है यार ये। हदी है। मायरिड वालों, मैं आ चुका हूँ। Path to that door. If you go there, you'd better make an entrance. एंट्रेंस ये लो, मैं जंप करके आ रहा हूँ, डबल जंप। कैसा है भाई? Says they're wary of strangers. They're at war. आई थिंक इसके बाद में इनसे सीफू से बात करके अपन इस पार्ट को खत्म करेंगे। The Sifu's door is always open for newcomers, but he cautions you. They'll expect you to behave, or you'll have to face the consequences. ये पहले धमकी दे रहे हैं भाई लोग। मास्टर शिफू, ये इनका मास्टर शिफू है। क्या बोल रहा है भाई? The Myriad tribe act on understanding of the greater good and a code of honor. They believe uniting the tribes is the only way to restore the peace. The Sifu is convinced that defeating the World Eaters and saving the Tree of Life is the only way to make the world a better place. He welcomes you to the Myriad fort and introduces himself as the tribe's Sifu. But he was hoping you'd show up. The news of a vigilante Ronin on crusade crossing the Great Wall through the crack in Bunker 101 has preceded you. अन पिछली बार अपन ने इसके बारे में नहीं पूछा था, इस बार इसके बारे में पूछूंगा मैं। The wall that separates them from the other side? The wasteland you came from? He guesses the time spent there just left a blank space in your memory, as empty and barren as the wasteland itself. He's convinced you've returned for a reason and is glad you chose to come here. The Sifu says sometimes one memory can make another come to life. He hasn't thought about your Muma for ages, even though she taught him a lot. He was one of the original Wang Fu disciples. पिछली बार अपन ने मुआ के बारे में पूछा था, इस बार disciples. There were 6 of them, but the unity fell apart after Lupa Lupin attacked the old village. Soon after, they formed new tribes based on their own values, and when the Blight started, the animosity escalated to war. The Sifu was waiting for something to tip the balance in their favor, and with you by their side, he's confident you can unite the other tribes. The one you should coerce first is the JAGNI tribe. इसका मतलब क्या है भाई? The Myriad were placed here to fulfill a certain purpose, chosen to unite the tribes and take control of their destiny. The tribes need a firm hand guiding them into the future. ये दोस्ती हो गई भाई। मास्टर शिफू, अपन दोस्ती हो चुके हैं। अच्छा, मायरिड ट्राइब के साथ में allied हो चुका हूँ मैं। Their kin have run out of options and found themselves backed into a corner. Even those who desire peace have been forced to prepare for war. ये ठीक है। They might bring them war, but they'll never take away their inner peace. He wants you to focus. These are the new rival outposts your tribe needs to take control of. He says you'll regret not being on their side. The only way you'll learn their secrets, Wung Fu and the tribe weapon now, is if you defeat him.
and that will never happen. You both have gentle minds, so they want to wage a gentle war that bonds as much as it breaks. Tells you not to be afraid. Your fate cannot be taken from you. Claim the rival outposts and earn the right to wield the tribe weapon. Once you've dealt with the rival's outposts, you'll challenge their Sifu to unite their tribe with yours and let your kin share land again. Challenge to unite. They passed the point of no return as their words lost power and see no other way forward than using violence to combat violence. Seeing you brings back his memories of the old village. Anyway, the memories you make with your family are strong and can sometimes come to life. Passing the old village on your way to the first rival outpost might help. The old village, what family? I mean, old village. Even though it's now a different place from a different time, it is a place that'll make you remember. Okay, exit the MYRIAD fort. I guess अब अपने को जो है ट्राइबल इसके साथ में अपन लड़ेंगे. फिलहाल तो MYRIAD फोर्ट से बाहर जाना है और ओल्ड विलेज में जाना है अपने को, जहाँ पे अपने पता नहीं क्या था. आई गेस मैप देखता हूँ मैं, यहाँ पे जाना है मुझे काफी दूर, काफी बड़ा है ये मैप. तो चलिए आपको मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट पार्ट में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास ध्यान रखिए और भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा. आई मीन बेसिकली मेरा कोई सब्सक्राइबर नहीं है, 10 लाइक भी मिल जाए तो बहुत ही बड़ी बात होगी इस वीडियो पे. तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट जब भी आए तो आप यहीं पे आए, है कि नहीं. चलिए पीस आउट.